चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में आई एम श्योर आप भी बात करना चाहोगे एंड पीपल विल आल्सो लाइक टू लिसन टू दैट बट इतने सारे लोग जो इस किताब में मेंशन हैं आई एम श्योर और भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को एक मकाम दिया होगा या उस जर्नी में कहीं ना कहीं एक पुश एक हाथ दिया होगा तो वाज इट डिफिकल्ट टू चूज कि यार देयर इज अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन के इतने ही पेजेस की किताब होगी तो कुछ लोग मिस हो गए इसमें से वो डिफिकल्ट थी वो चॉइस दो लोग तो यहीं बैठे अच्छा हाँ हम दोनों तो है ही नहीं यार जो मिस हो गए मैं जरूर पार्ट 2 करूंगी क्योंकि मेरी किताब सक्सेसफुल हो गई है नहीं या फिर हमें कुछ और बिफोर शी स्टार्ट्स राइटिंग द सेकंड एडिशन ऑफ दिस हम लोगों को कुछ अच्छा करना पड़ेगा दिव्या के लिए ताकि हमारा नाम उस किताब में आ सके No, but I think sometimes you just take friends for granted, and you should. There were certain chapters that I thought I have to mention because they were from my growing up years. And कहीं ना कहीं वो हो या आप हो उन chapters में हैं ज़रूर लेकिन वो chapters शायद dedicated नहीं हैं लेकिन yes there were a few people I really needed to talk about and most of them have been people I have grown up watching and it was I'm sure you're not one of those so but yeah बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ and I feel इन पर एक chapter लिखना था and well someone like him working for more than 50 years और आज इवन इन 2022 अगर आप किसी एक्टर से पूछेंगे जो अपना फिल्मों में करियर बनाना चाहता है आप किसके साथ काम करना चाहेंगे तो वो ये ज़रूर कहेगा दैट आई वांट टू डू वन फिल्म विद मिस्टर बच्चन जो मेरा सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया मैं ऐसे ज़रूर है कि बिकॉज आई वॉज ऑन द हॉट सीट फॉर 2 एपिसोड्स इन डिफरेंट ईयर्स फॉर सम चैरिटी तो वैसे उनसे मिलने का मौका मिला तो केबीसी खेल लिया उनके साथ लेकिन एक्टिंग नहीं कर पाया तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आई वांट यू टू टॉक अबाउट मिस्टर बच्चन role in that journey of yours when you worked with him in 2-3 films you have done with him. 5 yes. Well, I think I began my journey with him when I was 4. I used to tear my mother's saris and dupattas and I used to watch this tall man and say, he's magic on screen and I didn't know how to pronounce his name. But all I knew was I wanted to belong to that world where he belonged. And I used to dance on all his songs. I used to invite people, little kids from my neighborhood, bribe them with gulab jamun samosa ki party and say, listen, you must applaud when I'm dancing. So somewhere I felt very close to Mr. Bachchan just doing that. But I think somewhere I was very clear I wanted to belong to that industry. And when I joined the movies, he came to encourage us. मैं थी सोनाली बेंद्रे थी वो हमारी classes थी. And I was frozen when I was told Mr. Bachchan's coming to meet us. And I think the time was 11 a.m. But he was there at 10:50. And so मैंने रात को बहुत रिहर्सल की थी कि मैं ये बात करूँगी वो बात करूँगी I have to ask this, I have to ask that. I couldn't utter a word. And he just gave me one look, he smiled and he left. And मेरे सब दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि बहुत बनती है कि अमिताभ बच्चन fan and you didn't even speak a word. And then I got a chance to do Bagban with him. I don't know how many of you have seen Bagban, but I hated playing that nasty daughter-in-law. And what happened in that was that I didn't know how to disconnect myself from the role I was playing. Here I was hero worshipping Mr. Bachchan, and there I was mouthing those nasty lines. So once I reached home, I just broke down. And my mother said, what, you didn't do well today? I said, no, Mama, it was lovely. She said, no, why are you crying? I didn't know why I was. But I think Mr. Bachchan knew because the next day my usual chirpy good morning wasn't there. So I said, good morning, sir. So he said, you come here. So I just went to him. He said, do you know you're being very mean to me in this film? So I was suddenly defensive. I said, but sir, this is a film and I'm just, mouthing my lines. And there was pin drop silence from his side. He says, तुम्हें पता है मेरे fan तुम्हें छोड़ेंगे नहीं. And then he called गच्चक मंगवाई उन्होंने मेरे लिए मुझे खिलाई. Made me feel easy. How many people, a superstar to say the least, would observe a newcomer, see that she is uncomfortable, give her the warmth and affection that she needed that time, teach me without even telling me that your role is different and role and real and real is always very different. Without saying anything, how would I ever forget that?
So for me, Mr. Bachchan um, is Mr. Bachchan not just because he's a superstar, but for the person that he is. When I released my first book, and I had the foreword by Shabana ji, and my brother said, "Who would you want, to come and launch the book?" I said, "If I had my way, it should be Mr. Bachchan." So he says, "Then call." I said, "No, what if he says no?" He says, "Arey, call to kar." And I didn't call him, I messaged him. And पूरा दिन मैं मोबाइल देख रही थी कि कब आएगा मैसेज, ना ही बोल देंगे पक्का. And I just was very irritable and all that. And then I receive a message saying, कब आना है, कहाँ आना है, बता देना. So it felt so lovely that, again, as I said, I have nothing else but gratitude for somebody like him. No, I remember this. I was there at the book launch, और जब मिस्टर बच्चन पहुंचे थे वो बुक को लॉन्च करने के लिए, she wanted to tell him something about the book before he goes on stage. So obviously, अब भीड़ थी, लोग थे, तो मतलब बच्चन साहब को ऐसे दिव्या He की बात calls सुनने me के लिए- Jaya ji, There's height one की picture वजह से. also. So where he's talking to her like that. और दिव्या के बारे में हमारा एक जोक भी है दोस्तों में कि भाई मैं इनको तब से जानता हूँ जब ये बहुत छोटी थी और अभी भी बहुत छोटी हैं, अभी तक छोटी हैं. Okay, yes. There's one chapter in this book which is dedicated to Yashankar, and it feels so good to just call him Yashankar. यश जी के साथ हर कोई काम करना चाहता है, और मैं ना डे ड्रीम किया करती थी. लुधियाना में थी, कॉलेज में लास्ट मिनट की पढ़ाई करती थी और टॉप करती थी. लेकिन मुझे बीच में एक ब्रेक मिलता था जो मेरा वक्त होता था, जहाँ मैं फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, सब मैगजीन्स बिल्कुल पढ़ लेती थी. एंड आई यूज्ड टू जस्ट सिट एंड डे ड्रीम एंड से, so Yash Chopra says my next heroine is Divya Datta, opposite so and so, and I would say, and the best actor goes to Divya Datta. I used to just constantly say that. And when I got selected for this Stardust competition, the final day, there were 5 people sitting right in front of me for the final selection, जो मुंबई में था, जहाँ मैं और मेरी माँ हाथ पकड़ के बिना किसी को बताए secretively वहाँ गए थे. So my uncle is a director as well, but we kept it a huge secret. So ये 5 लोग थे: शेखर कपूर, सूरज बरजात्या, सुभाष घई, and Yash Chopra, and yeah, there was one more person. They were all sitting there, and I had like total, my legs were shaking, but मेरी माँ उधर बैठी ऐसे मेरे लिए पाठ कर रही थी, और इतनी लंबी खूबसूरत प्यारी लड़कियां आसपास. मैंने कहा मेरा कोई चांस नहीं है. फिर मैंने कहा ये जो शख्स है यश चोपड़ा, इनके साथ मुझे काम करना है, शिफॉन साड़ीज़ पहननी है, एड्स में गाने गाने हैं, and I wanted to be that heroine. And I just performed, and there was no expression there, and I thought हो गया मेरा, तो नहीं होने वाला. I finally got selected in the Stardust, to cut long story short. And then one day I got a call from Aditya Chopra saying, Yashji wants to meet you and I want to meet you for Veer Zara. मैंने कहा लो जी, मेरी तो किस्मत खुल गई, अभी मैं हीरोइन बनने वाली हूँ. So when I went and I heard the story, and then they said, so there is Shah Rukh in it, Mr. Bachchan in it, Preeti hai, Rani hai, Hema ji hai, Manoj hai. तो मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ, वीर ज़ारा तो हो चुके हैं इसमें कास्ट. So then they said there is Shabbo in it and we want you to play the friend's role. My face dropped. I said, Yash Chopra ki film mein where you want to be the chiffon clad heroine. If I play a friend, I'll be a friend for life to every heroine possible. I think Aditya kind of saw that and he said, listen, if we thought anybody could have done it, we want to call you. And trust me, you will always be loved for it. So there was something that they said. I had a blast doing that film. उस film का homework, dialects, उसकी look. I actually enjoyed the process of a Yash Chopra film. और premiere जब हुआ उस film का, और मैंने अपनी माँ का हाथ ऐसे tight पकड़ा हुआ, and we are watching. Interval में मैंने कहा मैं कैसे बाहर निकलूँ? अब I am everyone's best friend. I got out, and for the first time I was crowded. I was like, who's this girl? ये पाकिस्तान से आई है, यश जी इसको किधर से लाए हो? मैंने सिर्फ ऊपर देखा और कहा कि in the most unassuming ways, आपके ख्वाब पूरे ज़रूर होते हैं. I became a Yash Chopra heroine for sure, in a very unconventional way, but yes. Yeah, I was wondering because कई बार ऐसा होता है कि आप यश चोपड़ा की हीरोइन बनना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हीरोइन के दोस्त का रोल कर लीजिए आप. As an actor, I can understand. क्योंकि मैं जब नया बॉम्बे आया था एक्टर बनने, मुझे सिर्फ हीरो के दोस्त के रोल ऑफर होते थे. क्योंकि ना तो ऐसा लगता था कि मैं गिटार बजाते हुए
उतरूंगा स्क्रीन पे, आऊँगा बाइक से उतरूंगा, सो हमेशा ऐसे हीरो के दोस्ती रोल ऑफर होते थे. ओके, आई हैव जो एक, अगर किसी कोई फेस होता ना इंसानियत का, तो वो मेरे लिए गुरदास मान साहब होते. एंड हाउ आई नो हिम, इट्स बिकॉज ऑफ हर. तो एक पंजाबी फिल्म थी देश होया परदेस, जो बन रही थी, जिसमें दिव्या थी, जूही चावला थे और मान साहब थे. अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं पंजाब में ही पैदा हुआ और मैं पंजाबी अच्छी बोल है ना. तो अचानक मुझे कॉल आया कि दिव्या ने मुझे फ़ोन किया कि अनूप तू फ्री है 2 दिन पहले, कि एक 10-12 दिन के लिए. ऐसे क्यों, क्या हुआ? नहीं, तेरे को एक फ़ोन आएगा इस फिल्म के लिए, अभी हम लोग अभी चंडीगढ़ में हैं, चंडीगढ़ में शूटिंग करनी है. सो ऐसे परसों शूटिंग है यार, और मतलब कैसे? इसी से, नहीं तू बता तू फ्री है कि नहीं. ऐसे हाँ मैं फ्री हूँ. देन मान साहब्स वाइफ मंजीत जी कॉल्ड मी एंड शी टोल्ड मी द रोल. ऐसे नहीं, मैं आ रहा हूँ, पक्का आ रहा हूँ. बट वॉट आई एम कमिंग टू इज कि आप एक फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, एक्चुअली कोई और एक्टर वो रोल करने वाला था, उनका एक शूटिंग के टाइम पे एक्सीडेंट हो गया और लास्ट मोमेंट पे एक्टर चेंज करना पड़ा. दिव्या सजेस्टेड माई नेम एंड इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म. पर व्हाट आई एम कमिंग टू इज कि मैं जब चंडीगढ़ पहुंचा, मुझे सीधा होटल में सामान रख के लोकेशन पे जाना था, तैयार होके, जिसमें यू नो आई हैड टू वेयर अ बियर्ड ऑल्सो. तब बियर्ड नहीं थी मेरी, उस रोल के लिए चाहिए थी. और डायरेक्टर जो है मुझसे पहली बार जिंदगी में मिल रहे थे. एंड आई वाज वंडरिंग, आई सेड यार इन्होंने मेरा पता नहीं काम देखा है नहीं देखा है, और इस रोल के लिए मैं उनके हिसाब से फिट होता या नहीं आता हूँ, कभी मिले भी नहीं है. पर इट वॉज हर वर्ड. दिव्या ने ये कहा कि अनूप कर सकता है. ये इट सेज अ लॉट अबाउट यू नो हाउ मान साहब्स फैमिली एंड द डायरेक्टर मंजीत जी, एवरीवन बिलीव्स हर वर्ड एंड हर बिलीफ अबाउट मी एज एन एक्टर कि हाँ अनूप कर लेगा. मैं, मेरा डिसीजन गलत नहीं होगा, मैं एम्बैरस नहीं होंगी. तो ये जो डायलॉग था ना, मैंने जो कहा था, गुड्डी जी की हाल चाल ने, आई वॉज अ बैड गाय इन दैट फिल्म एंड आई यूज टू treat her very badly in that film. So it's just, her name was Goody in that. So अब दिव्या तुम बताओ यार, because I'm sure you have a lot to talk about Mansa. How do I start when you begin with somebody? And after Train to Pakistan, which again I think I happened to get to know Khushwanji very well in that film. Khushwanji ke saath बैठ के, in fact he was the one who introduced me to the world of Amrita Pritam, who I think is for me the ultimate. And फिर उनके घर गई थी, he invited me, and then his sense of humor, I think I've been very fortunate that I got to spend a lot of time with Khushwanji on that film. So that was my first, and then thanks to this film Train to Pakistan, I got Shaheed-e-Mohabbat, because Manjeet ji said oh kudi kedi hai jehdi Train to Pakistan ch onu lena, and this was an Indo-Pak love story. And my mother was तो मतलब एकदम ऑन स्काई, एकदम सातवें आसमान पे जब बोलते हैं, बिकॉज पंजाब में पहले जब आई यूज टू बी ट्राइंग टू गेट मूवीज, एवरीवन यूज टू आस्क हाँ जी की करदी कुड़ी तुहाडी अजकल केड़ी फिल्म है. मम्मी अगर कुछ बोलती थी हाँ ये वाली फिल्म करें, अच्छा असी तो सुनिया भी नहीं. सो शी वुड फील कि अच्छा मेरी बच्ची का भी टाइम आएगा. तो वो चीज़ उस एक फिल्म से बहुत वैलिडेट हुई कि गुरदास मान के साथ दिव्या एक फिल्म कर रही है. और मान साहब और मंजीत जी दोनों के साथ आई थिंक समटाइम्स इट जस्ट बिकम्स फैमिली फॉर यू. मेरी पंजाबी इन्नी वधिया जड़ी हुई है वो थैंक्स टू मान साहब हुई है. मैं इत्थे लुधियाने तो पंजाबी इन्नी आउंदी होई नहीं सी मैनू, उत्थे जाके बोलना शुरू किया एंड माई पंजाबी स्किल्स जस्ट गॉट रियली beautiful. What I learned from Man Saab was humility. And it's also in one of my chapters where I was rehearsing my lines and a guy came and he said, ma'am, can I have your autograph? I said, please yaar thoda na baad mein aana, main lines kar rahi hu, bada mushkil scene hai. And I saw these 3-4 boys standing there very disappointed. And थोड़ी देर में शोर सुना तो I just looked up and Mansa was not just signing autographs for them, clicking pictures with them and everything. So I just went, I said, मान साहब हमारा इतना मुश्किल सीन है, आप मतलब आप उनको इंडल्ज कर रहे हो. He says इना करके तैसी बने हैं ते इना नु क्यों इना टाइम दई. That thing didn't leave me at all. उस दिन के बाद से आज तक I will drop everything and I will first click a picture with whoever says and I love you. And that also I must thank this lovely audience. मैं कल से यहाँ पर हूँ, but आप लोगों ने जो मुझे प्यार आते जाते दिया है, जो blessings दिए हैं, I can just not be enough. I can't say I'm grateful. I
somewhere else. Shukriya. Thank you.